अगले टेस्ट के लिए बस पढ़ के आना, टेस्ट कभी भी रहेगा, है ना। चलो अभी टेस्ट है ना, ऑब्वियसली यूनिट 4 ऑब्वियसली। नॉनसेंस, नॉनसेंस। सेक्शन 3 या 4, 4 कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, 5 रिवोकेशन, शेवड़िया बोलना, 10 एसेंशियल्स ऑफ, हंस रहा मेरे मत देख के, वो मजाक चल रहा है क्या। 10 कालिया नहीं बोला, शेमड़ा बोला। 10 एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, 11 competency, 12 sound mind, 13 consent, 14 free consent, 15 coercion, 16 undue influence, 17 fraud, 18 misrepresentation, 19 effects of coercion, 19A effects of undue influence, 20 mistake, 21 mistake as to law, 22 unilateral mistake, 23 unlawful object and unlawful consideration, बराबर है क्या। 24 unlawful parts, 25 no consideration no contract, 26 agreement restraint of marriage, 27 restraint of trade, 28 restraint of legal proceedings, 29 uncertain, बराबर क्या। 30 उसका क्या मेरे को याद नहीं आता, ओके। 30 इज व्हाट बच्चों, मेजरिंग। चलो पढ़ाई करते, किधर है। 148 सेक्शंस ऑफ कंपनीज एक्ट आता है मेरे को, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं। नन्हे मुन्ने का तुम्हारे पास देके रखा मैंने वो सब। 31 नहीं किया अपन ने, 31 to 36 नहीं किया है ना, 37 किया ना फिर, राइट। 37 राइट जी, ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। 38 जोर से बोलो सब लोग, effect of refusal to accept offer of performance। 39 effect of refusal of party to perform wholly। 40 person by whom promises to be performed। 41 effect of accepting performance from third persons। 42 devolution of joint liabilities। 43 any one of the joint promisers may be compelled to perform। 44 effect of release of one of the joint promisers। 45 devolution of joint rights। 51 में गए हम लोग। 51 promiser not bound to perform unless reciprocal promise he ready and willing to perform। 52 order of performance of reciprocal promises। 53 liability of party preventing event on which contract is to take effect। 54 effect of default as to that promise which should be first performed in contract consisting of reciprocal promises। 55 effects of failure to perform at a time fixed in a contract in which time is essential। कल किया था अपन ने, राइट। 56 किया ना अपन ने, लिखा नहीं है क्या, अग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, वाइड लिखा नहीं फिर, आई थिंक अपन ने नोटबुक में, ठीक है। आई थिंक रुको, देता हूँ टाइम लिखने को, रुक तो जाओ। 57 आई थिंक पढ़ा ना फिर अपन ने, reciprocal promise to do things legal and also other things illegal। वो घर वाला एग्जांपल, घर बेचना is legal but घर use for gambling is what, illegal। 58 alternative promise, one branch being illegal, example rice and opium, and rice या फिर opium, or rice or opium, बराबर क्या। 59 application of payment where debt to be discharged is indicated, debtor ने बोला। 60 debtor ने नहीं बोला। 61 दोनों ने नहीं बोला, अरे हाँ या ना। 60 चेक करो, एप्लीकेशन पेमेंट वेयर डेट टू बी डिस्चार्ज इज नॉट इंडिकेटेड, मतलब क्रेडिटर के हिसाब से ना। 61 एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर नीदर पार्टी अप्रोप्रिएट्स, बराबर। तुमने एक नोटबुक में क्या नहीं लिखा बताओ मुझको। 56 बच्चों लिखो। Agreement to do impossible act is what, void। उसमें तुम्हारा बच्चों क्या रहेगा पहले,
एक रहेगा इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, मतलब पहले से इम्पॉसिबल है. इट इज जस्ट दैट बोथ पार्टीज डू नॉट नो और ओनली वन पार्टी नो, है ना. लिख लिख पहले थोड़ा क्लियर है क्या? हुआ क्या? Initial impossibility, both parties are aware. So void, both parties are unaware, but you still what बच्चों? Void. Only promiser aware, so void, and promiser shall compensate promisee for loss. हुआ? आगे बढ़े? Only promiser aware, and lastly दूसरा पॉइंट कौन सा है? Subsequent या फिर supervening impossibility. लोग इधर शिफ्ट हो गए क्या तुम लोग? इधर का इधर. Subsequent या फिर supervening impossibility मतलब क्या? स्टार्टिंग में बच्चों क्या था? इनवैलिड था और पॉसिबल भी था. But due to unexpected events, it becomes impossible later. Therefore, it is void after that event. Therefore, it is void after that event. हुआ? कोपरे में क्यों बैठे तू? ऐसी डॉन बन के पूरे क्लास में नजर रखने के लिए. हुआ? देखो फटाफट. कितने पेजेस बचे चैप्टर के अभी? थोड़ा सा ही पेज है ना, बचा है ना? दो. मेरी गलती हो गई. ये यूनिट के लिए कितने पेजेस बचे? आ जाओ. 1.14. 1.14 अपने टेक्स्ट बुक में. रेडी? कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड नॉट बी परफॉर्म्ड. अरे प्रसाद, यूनिट का नाम क्या है? परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अरे आया ना? तो बच्चों ध्यान देना. कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट बी परफॉर्म, मतलब जिम्मेदारी है या नहीं है करने की? नहीं है. इन वे दे आर रिलीज. दे व्हाट बच्चों? रिलीज. चेक करो. तो विच नीड नॉट बी परफॉर्म विद क्या पर इंपॉर्टेंटली विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज. कॉन्ट्रैक्ट चालू किया, उनका इंटेंशन था, पर बाद में व्हाट आर दे नाउ गिविंग कंसेंट टू दैट वी विल नॉट
fulfill this contract. उसको बंद करते हैं अपन, है ना? So under this heading we shall discuss the principles of novation, rescission and alteration. The law is given from section 62 से लेके 67 तक. Okay? So effect of novation, rescission and alteration. If the parties to a contract agree to substitute a new contract for it or to cancel it or बच्चों change it, the original बच्चों contract need not be performed. What is novation, rescission, alteration करेंगे हम थोड़ी देर में. But the point important यहाँ पे क्या है? Is there a change or no? There is some kind of change in which contract? Old or new contract? Old contract. तो old contract बच्चों करने की जरूरत है क्या हमको? The old is in a way replaced with new, or the old is rescinded. What do you mean by rescinded? Cancelled. उसको perform करने की जरूरत है क्या? So there are three ways by which we did not perform the contract. पहला क्या था? Novation. Completely नया contract बनाने का. दूसरा cancellation. तीसरा completely नया बनाने की जरूरत नहीं है, but we will make some changes. And some changes बच्चों are called as what? Alteration. Entirely new contract रहेगा तो बच्चों क्या रहेगा वो? Entirely new contract, novation. थोड़ा सा changes है कुछ alteration रहेगा, that is alteration. And cancel मतलब rescission. Overall, the effect of all three of is what is common, and the original old contract need not be performed. Clear? चलो, let's read. Analysis of section 62. Effect of novation. The parties to a contract may substitute, क्या बच्चों? Substitute a new contract for the old one. If they do so, it will be called as novation. In novation, the old contract is discharged. मतलब क्या? Fulfilled. करने की जरूरत नहीं है, ऐसा माना जाएगा. And therefore, it need not be performed. मतलब discharge मतलब no more liable. वहां पे लिख दो. No more liable. No more liable. हुआ? On novation, the old contract is discharged, and consequently, it need not be performed. Thus, it is a case where there being a contract in existence, some new contract is substituted for it, either between the same parties, underline the word, or between different parties. Important. Okay? मान लो बच्चों ए बी सी में कॉन्ट्रैक्ट था. ओके, यहाँ पे कौन हो गया? डी. जो भी रहेगा, जो कॉइन वो क्या बोलते हैं, को बोरोवर्स, जॉइंट बोरोवर्स या फिर जॉइंट लेंडर्स. ओके, ए बी सी को बच्चों यहाँ से हटना है. हटना मतलब पहले कि वी डोंट वांट टू बी एनी मोर पार्ट ऑफ द सेम. ओके एवरीबॉडी. तो जो भी लायबिलिटी है, लोन है, जो भी व्हाट एवर इट मे बी, इट माइट बी लेटेस्टली टेकन अप बाय एक्स वाई एंड जेड. तो किसने किसको रिप्लेस किया? एक्स वाई जेड ने बच्चों ए बी सी को रिप्लेस किया. जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में था? एबीसी एंड डी. आर वी चेंजिंग द पार्टीज हियर और नो नाउ? यस. तो अगर पार्टीज भी चेंज हो गए, अगर मान लो, तो क्या रहेगा बच्चों? वो नोवेशन रहेगा. एबीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर लायबिलिटी किसने टेकअप कर लिया? एक्स वाई जेड ने. क्लियर टू एवरीबॉडी? तो विल बी कॉल्ड एज व्हाट? नोवेशन. इन दिस केस हु नीड नॉट परफॉर्म? ABC are discharged. They did not perform the contract. Simple. Good. Or between different parties, the consideration mutually being discharge of old contract. मतलब you are entering into new contract with the understanding that old contract need not be performed. समझा? आगे. Novation can take place only by mutual agreement between the parties. दोनों का consent है, तो बच्चों हम कर पाएंगे क्या? Novation. Clear? Novation requires mutual agreement. Yes. Take an example. A owes B rupees 1 lakh. ओरे डेटर कौन है? है ना? ए. ओके, आई थिंक मैंने तुमको कुछ बोला था इसका एग्जांपल. ओव्स मतलब क्या? कुछ लिख के दिया था मैंने तुमको. ओव्स. अच्छा, व्हेनेवर इन डाउट तो उसको तुम रिप्लेस कर लो, दिमाग में वही डालो. ए ओज बी मतलब क्या? ए डेट में है बी के. उतना समझेगा तुमको? ए इज इन डेट ऑफ बी. ओके, ए ओज बी मतलब बच्चों ए इज इन, तुमको चाहिए तो वहां पे लिख दो ए इज इन डेट ऑफ बी. तो ये तरीका याद करो ना. ओज को अपन किसको रिप्लेस करो विद द वर्ड इज इन डेट. चलेगा? उतना समझ जाएगा ना तुमको?
ए इज इन डेट ऑफ बी, तो ए क्या बन गया? डेटर. लिख लो उधर. हुआ? सो ए ओज बी रुपीज 1 लाख. कौन किसका डेटर है? ए बी का डेटर है. ठीक है, आगे अब ध्यान देना. तो ओरिजिनल बच्चों कॉन्ट्रैक्ट वाज बिटवीन ए एंड बी. गुड, ध्यान देना. ए बी एंड सी अग्री दैट, ए बी एंड सी अग्री दैट, सी फिलहाल स्ट्रेंजर है कि नहीं? स्ट्रेंजर. हाँ. सो ए बी एंड सी अग्री दैट सी विल पे बी and B will accept, he will accept, B will accept rupees 1 lakh from C in lieu of, in exchange or instead of some due from A. कुछ जेपा ऊपर से गया. ओरिजिनल बच्चों किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट था? अभी जस्ट ऊपर तुमको जो एग्जांपल दे यही वही है, बस दो पार्टीज के साथ है, A and B. नाउ देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन नॉट A B and C. इसी बच्चों B को पेमेंट करेगा एंड किसके जगह पे? A के बदले में. विल नाउ इज A डिस्चार्ज और नो? कैन B sue A if C does not pay? क्वेश्चन समझा है? yes no करे. Can B sue A if C does not pay? No, because now it is a new contract, और new contract का इफेक्ट क्या है? Old contract is discharged, no parties are liable on the same. A गया उड़ के, अरे हाँ या ना? तो बच्चों B will have to sue C only to recover the money. Simple. पक्का? Good. A's liability thereby comes to an end. Okay, na like. And the old contract between A and B is substituted by new contract between B and C. The old parties are gone now. They are no more responsible. They are discharged from their liabilities. Clear? जिम्मेदार नहीं है वो लोग. हुआ? Addition बच्चों, novation. Clear? लिखना रहा तो क्या लिखोगे बच्चों? How will you write what is novation? चलो आ जाओ ऊपर फिर से. It is substitution, अरे हाँ या ना, of a new contract for the old. Yeah, ये वाला line important है. Contract is substituted for either between the same parties or even बच्चों what? Different parties. That is one of the most important difference. Okay? हाँ, आगे बढ़े. And what does it mean? Discharge of old contract. इधर क्या? ये वाला बोला रे मैंने. It is substituted for either between same parties or between different parties. तो different parties को अंडरलाइन करके रखो, हाईलाइट करके रखो. That is more important. चलो वही कॉन्ट्रैक्ट में उसको चेंज करवाने के लिए नए पार्टीज भी आ सकते हैं. ओके, बढ़े आगे. रिस्किशन रेडी मतलब क्या? पार्टीज आर म्यूचुअली अग्रीड, लेट्स टर्मिनेट. अरे हाँ या ना? अपना हंसी मजाक में हो नहीं रहा है ना, तुम खुश ना मैं खुश, तो क्या करते इसको? फुल स्टॉप लगा दे. फुल स्टॉप. अरे हाँ यार, तो कैंसिल. और कॉन्ट्रैक्ट इज आल्सो डिस्चार्ज बाय रिस्किशन व्हेन द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू रिसाइन इट. अरे हाँ, पार्टीज में जो है म्यूचुअली एग्री टू रिसाइन इट, द कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म्ड. इन केस ऑफ रिस्किशन only the old contract is cancelled. And importantly, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है क्या बच्चों इसमें? नहीं. It is needless to point out that novation also involves rescission. Why? किसका? Correct. novation में includes rescission मतलब क्या? तो novation में क्या हो रहा है? कैंसलेशन हो रहा है पर किसका? पुराने कॉन्ट्रैक्ट का. So novation includes rescission. अरे हाँ या ना? अब लिख दो, छेद लिख दो. Since it resigns कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? वेरी गुड. It resigns old contract. हुआ? Both in novation and rescission, the contract is discharged by what बच्चों? फिर से म्यूचुअल अग्रीमेंट. ठीक है बच्चों, ऑल ओके. आगे बढ़े हम लोग. ऑल्टरेशन मतलब क्या? थोड़ा सा चेंज. इट कैन बी काइंड ऑफ माइनर चेंजेस in the contract, but importantly the only difference between alteration and novation is alteration बच्चों between same party, जहाँ पे party change नहीं होंगे. terms of contract can change. कुछ अमाउंट बढ़ा दिया, कुछ सर्विस कुछ रहेगा, डिलीवरी का रहेगा, वो बढ़ा दिया, कम हो गया, दैट इज ऑल ओके. बट पार्टी से बच्चों व्हाट स्टिल द सेम. पार्टी चेंज हो गया तो क्या रहेगा वो? novation. Understood? Good. As in the case of novation and rescission, so also in the case where a parties
टू अ कॉन्ट्रैक्ट अग्री टू ऑल्टर इट, तो ओरिजिनल जो भी टर्म्स और कंडीशंस थे बच्चों क्या रहेगा वो rescinded. और हाँ, with the result that it need not be performed. In other words, a contract is also discharged by alteration. कौन सा contract? पुराना contract. Yes. The terms of contract may be so altered by mutual agreement that alteration will again have effect of what? Substituting a new contract with old one. In other words, the distinction between novation and alteration is all बच्चों very slender. Slender means slim, tiny, है ना? Slim. वो कुछ जरूरी नहीं है, उनको कहना क्या है बर कि नोवेशन और ऑल्टरेशन में फर्क ज्यादा नहीं है पर बहुत कम फर्क है. ओके, तो आ जाओ, इसके ऊपर कभी कोई क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन नोवेशन एंड ऑल्टरेशन. कॉमन के इन बोथ दिस केसेस द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म्ड. करेक्ट. Still there is a small difference between the two. Ready? Novation means substitution of existing contract with the new one. Novation may be made by changing in terms of contract, or there will be change in the contracting in the underline. Contracting parties में ही change हो सकता है. But in case of alteration, the terms of contract may be altered by mutual agreement by contracting parties. But importantly, parties will remain the बराबर. पढ़े आगे. In case of novation, there is altogether novation ना, और altogether a substitution of new contract in place of old one. मतलब अगर तुमको बहुत सिंपल एग्जांपल के लिए बताऊं, मेजर चेंजेस जहां पे हो रहे हैं, कंप्लीट रिवैम्प, ए से लेके जेड ऑल द वर्ड्स आर गेटिंग चेंज्ड, या फिर तुमको पूरा नया ही करना है तो वो क्या रहेगा बच्चों? नोवेशन. पूरे कॉन्ट्रैक्ट में एक आध दो पॉइंट्स तुम चेंज कर रहे हो, क्या रहेगा वो? ऑल्टरेशन. अंडरस्टूड? बट इन केस ऑफ ऑल्टरेशन it is not essential to substitute a new contract in place of old contract. In alteration, there will be a change in some of the terms and conditions of the original agreement. यहाँ पे हमने नोवेशन में क्या करें बच्चों? Altogether substitution of a new contract. अरे हाँ यार, in place of old one. it is contract to contract replace हो रहा है. Alteration में कुछ terms और conditions replace हो रहे हैं, not replace, change हो रहे हैं. अरे हाँ, clear? And last one, remittance, remission. आ जाओ अगले पेज में 63. Promisee may waive give up. waive मतलब क्या बच्चों? give up, relinquish. याद आ रहा है क्या? सरेंडर कर देना. और रेमिट मतलब वही, वे मतलब रेमिट, परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस. माफ कर दिया. किसने किसको माफ कर दिया? प्रॉमिसी ने प्रॉमिसर को माफ कर दिया. मतलब क्या? परफॉर्म नहीं किया तो भी खुश, चलेगा, तुमको छोड़ दिया. अरे आया ना. एवरी प्रॉमिसी में डिस्पेंस, वही छोड़ देना मतलब, में डिस्पेंस विद रेमिट होली और इन पार्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस मेड टू हिम. होली बच्चों या फिर इन पार्ट, कुछ पार्ट छोड़ दिया या पूरा का पूरा छोड़ दिया उसको. और मे एक्सटेंड द टाइम फॉर सच परफॉर्मेंस. कुछ डेट वगैरह रहेगा, ड्यू हो चुका, उसको बोला और 2 महीने ले और 6 महीने ले, वैसा कुछ है ना. और मे एक्सेप्ट, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ध्यान दो उसको मैं अंडरलाइन करो. मे एक्सेप्ट इंस्टेड ऑफ इट एनी सेटिस्फैक्शन विच ही थिंक्स फिट. वहां पे बच्चों वर्ड मिस हो गया है, फिट. थिंग्स फिट हुआ. इन अदर वर्ड्स अ कॉन्ट्रैक्ट में भी डिस्चार्ज इवन बाय रेमिशन. क्यों बच्चों? यहाँ पे किसने दिया, किसको रेमिट कर दिया, छोड़ दिया? प्रॉमिसी ने प्रॉमिसर को रिहा कर दिया कि तूने काम नहीं किया तो भी चलेगा, या फिर तूने जितना भी काम किया मैं उसको मान लेता हूँ एज फुल फ्लेज एंड आई विल नो मोर सू यू, आई गिव यू डिस्चार्ज. ये आ गया. तो भले प्रॉमिसर ने थोड़ा सा कुछ काम किया रहेगा, फिर बिल्कुल भी कुछ नहीं काम किया रहेगा, प्रॉमिसी में से दिस इज ओके, इतना है, दिस इज लेट अस क्लोज द कॉन्ट्रैक्ट. अंडरस्टूड? एग्जांपल को स्टार मार्क करो. ए ओज बी 5 लाख, बराबर. डेटर कौन है? ए पेज टू बी. अब ध्यान देना. एंड बी एक्सेप्ट्स इन सैटिस्फैक्शन ऑफ होल डेट. पूरा डेट बच्चों कितने का था? कॉमा ₹2 लाख पेड एट द टाइम एंड प्लेस एट विच ₹5 lakhs वर पेएबल. डेट कितने का है? ए ने कितना पे किया? बी ने क्या बोला?
चलेगा। पर बी ने बच्चों मतलब बी ने वो 2 लाख एक्सेप्ट किया, इसका मतलब क्या है कि 3 लाख इज स्टिल पेएबल। 3 लाख इज बच्चों नाउ नो मोर पेएबल। पढ़ो फिर से, पढ़ो एग्जाम में फिर से। क्या Here बच्चों पार्ट परफॉर्मेंस इज टेकन एज फुल परफॉर्मेंस, पार्ट परफॉर्मेंस इज डीम्ड एज फुल परफॉर्मेंस। यहाँ पे डिस्काउंट दे रहा है, कौन इसको डिस्काउंट दे रहा है? प्रॉमिसी प्रॉमिसर को डिस्काउंट दे रहा है। तूने जितना किया मेरे लिए काफी है, उतना मैं मान लूंगा कि तूने पूरा किया, मान लूंगा। एंड देन यू आर नो मोर लायबल। अरे हाँ, I'm just writing it for understanding part performance is taken as very good. By very good. जितना हो गया उतना ठीक, मैं उसमें खुश हूं, ऐसा प्रॉमिसी ने प्रॉमिसर को बोला। हुआ। बढ़े आगे। आ जाओ। राइट डाउन contracts which need not be performed. 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 Section 62. Ready? Yes, sir. If it is novation, restriction and alteration of contract. 63. Promise may waive, promisee may waive or remit performance of promise. Promisee may waive or remit performance of promise. उसका दूसरा नाम क्या बच्चों? रेमिशन। तो मैंने क्या क्या किया? नोवेशन, डिस्कशन, ऑल्टरेशन एंड रेमिशन। करेक्ट? हुआ? नोवेशन में जो नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अरे हाँ, और रिस्किशन में क्या होगा? नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ऑल्टरेशन में क्या होगा? चेंज होगा। वी आर नॉट टॉकिंग न्यू कॉन्ट्रैक्ट हियर, बट चेंज इन एग्जिस्टिंग वन। और रेमिशन में छूट दे दिया। किसने किसको? प्रॉमिसी ने प्रॉमिसर को रिहा कर दिया, मुक्त कर दिया। अरे हाँ,
स्टडी मटेरियल में आओ, देख लेते एक बार, उधर खत्म करते अपन। क्या व्हाट टाइम दिया ऑलरेडी, बोली मत। पेज 1.86, अपना टेक्स्ट बुक भी हो जाएगा क्लास का, स्टडी मटेरियल भी हो जाएगा, हैंड इन हैंड। ओके, and contracts which need not be performed, what danger है तू, with the consent of both the parties, novation, rescission, alteration, हो गया ना। if the parties जो contract agree to substitute new contract, क्या रहेगा वो novation, or you can cancel it or alter it। हो गया बच्चों ये सब अपना। एग्जाम्पल भी सेम था क्या, ABC वाला, C agrees with AB, C agrees with A and B that C will pay the debt instead of A, बराबर ना। तो क्या हो गया वो नोवेशन। अरे हाँ सेम ही तो है, हो गया अपना सब। टेंडर हो गया, सेम है बच्चों। ओके, लेट्स कम बैक टू आवर टेक्स्ट बुक 64, रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट, 4 मार्क। देखो ये पूरा ओवरऑल जो भी करे सब इंपॉर्टेंट ही है, नोवेशन, रिस्केशन, ऑल्टरेशन, जो भी करे, रेमिशन, सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा चट्टी को चढ़ गई कुछ तो आज, चट्टी पी के अगर तो आज ज्यादा। हाँ घर का तेरे को तो मतलब सस्ते में रहेगा तेरे को, तो क्या कौन चेक करता रहेगा घर पे, तो जिन बोले फ्री। रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, डू यू अंडरस्टैंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट? कौन से केस में अपने देखा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट? कोएर्शन, अंडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, और बोलो। कल परसों लिखा नोटबुक में, क्या कल परसों लिखा नोटबुक में, कल ही लिखा रहेगा शायद। वॉइडेबल क्या नोटबुक वॉइडेबल दिख रहा है क्या? क्या वॉइडेबल लिखा नोटबुक, वॉइडेबल 55 किसके लिए वो? वेरी गुड, एसेंशियल वाला, टाइम ऑफ एसेंस वाला शायद। कब बोला तूने? बोले किसको बोला तूने, सुने क्या? देखे अभी तो किया था अपन ने करेक्ट, कौन सा वाला? टाइम ऑफ एसेंस, और काम नहीं किया टाइम पे तो वॉइडेबल, और 2-3 जगह पे इधर उधर बच्चों वो रहेगा, और 2-4 चीजों पे रहेगा बच्चों वॉइडेबल, ठीक है। अब ध्यान दो, वॉइडेबल अधिकार मिलता है क्या? राइट मिलता है किसको? अग्रीव्ड पार्टी को, टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट और कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट, अंडरस्टूड? गुड। और एक कौन सा था वो नाइट परफॉर्मेंस सिंगर वाला? अरे हाँ या ना, वही है ना वो? हाँ हाँ जो भी है, हाँ। क्या हो गया? तू बैठो, गंदे बच्चे। रेडी? द लॉ ऑन द सब्जेक्ट इज, the law on the subject is when a person at whose option a contract is voidable resigns it, मतलब क्या, कौन सा चूज किया उसने बात? कैंसलेशन का, काट डाला। अरे हाँ है ना, कॉन्ट्रैक्ट। द अदर पार्टी अरे हाँ या ना, मतलब जिसको
अदर पार्टी, समझ गया? किसके पास राइट था कैंसिल करने को, उसने कैंसिल कर दिया. अदर पार्टी need not perform any promise therein contained in which he is the promisor. The party rescinding avoidable contract shall, if he has received any benefit. समझो वो FI किधर जाता बीच बीच में पता नहीं, बेनिफिट है वो. उसके मन में वही चलता ना. Has received any benefit thereunder from another party to such contract, restore such benefit so far as may be to the person from whom it was received. ऊपर से गया. वो याद है तुमको बच्चे एग्जाम्पल कोवर्शन वाला, वॉलेट बुलेट. अरे आया ना, मान लो इधर ए है और इधर बच्चों ए ने बी के ऊपर, अरे कुछ नहीं किया, कोवर्शन किया, बराबर है. क्या हो गया तेरे को? And pay attention. Let us take example of car. Okay, vintage car समझते हैं, पुराने जमाने का मस्त. It has more value in fact. Okay, whatever it is, उसका मार्केट वैल्यू रहेगा 20 लाख रुपए, एग्जांपल दे रहा हूं मैं. ओके एग्जांपल. और ए ने बच्चों बी को ₹10 लाख जबरदस्ती दिए. अरे हाँ या ना, है कि नहीं? नहीं उतना ही. And he took the car. And बच्चों what took the car. Is it okay till here? Fine. यहाँ पे who is the aggrieved party? He is the aggrieved party, has a right to what? Cancel the contract. और यहाँ अब as per law क्या बोला है? Here, let us see if he cancel the contract. उसकी जो भी जिम्मेदारियां थी उसको तो करने की जरूरत नहीं है, but plus अगर उसको जो भी बेनिफिट मिला है उसको रिस्टोर करना पड़ेगा. मतलब what? कोर्स में whenever it is avoidable and you cancel the contract, you go back to the original position. वो पैसे किसको देने पड़ेगा? रिटर्न ए को. और कार का क्या होगा? रिटर्न आ जाएगा. अरे हाँ है ना, ए ने बी को पैसे दिए थे ना, ए ने बी को पैसे दिए थे, बी ने ए को कार दिया था जबरदस्ती पर. अरे हाँ, तो कैंसिल किया तो क्या होगा? रिवर्स हो जाएगा. अंडरस्टूड? चेक करो. when a person, अपने एग्जांपल मुझको बताना, ठीक है? when a person at whose option a contract is voidable is rescinds it. किसने कैंसिल किया? बी ने कैंसिल किया. the other party कौन? ए did not perform any promise. जो भी रहेगा, whatever he might have agreed, इसको ऊपर के और 2 लाख में बाद में दूंगा, 3 लाख बाद में दूंगा, whatever it is, therein content in which he is the promisor. the party canceling the contract shall, if he has received any benefit, कितना benefit मिला उसको? 10 लाख का. shall what? restore the benefit. उसको जितना मिला है उतना. ठीक है, बढ़े आगे. So such a contract is terminated at the option of the party who is empowered to do so. If he has received any benefit under the contract, he must restore the benefit to the person from whom he has received it. हो गया. Example, an insurance company may cancel a policy on the ground that material important fact have not been disclosed. तुम्हारा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, तुम्हारा टेस्ट होता है, बाकी रिपोर्ट तुम्हारे पुराने रिपोर्ट देखे जाते हैं, और तुमने कुछ चीज डिस्क्लोज नहीं किया. अरे हाँ या ना, उनका रिस्क बढ़ गया ना बच्चों. इज इट ऑनेस्ट और फेयर कॉन्ट्रैक्ट? तुमको कुछ चीज बाद में पता चली तो क्या कर सकते वो लोग? दे कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट. अरे हाँ या ना. सो व्हेन इट डज सो, हाउएवर, क्या किया? इंश्योरेंस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया. लेटर ऑन, यस, the premium so collected by it of the policy as reduced by the amount of expenses incurred by it must be repaid back to the policy holder. Are they continuing with the contract? Are they going to give him any claim later on? तो क्या फुकट में लोग प्रीमियम खाएंगे क्या? प्रीमियम का जो भी तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा आता है उसे रिड्यूस करके रिटर्न करना पड़ेगा पॉलिसी होल्डर को. गुड, आ जाओ नोटबुक में. बहुत छोटे छोटे सेक्शन है, ऐसे कैसे छोड़ दें? शिवो
हुआ? Party rescinded the contract shall restore the benefit received. हुआ? किसी और हो गया ना? गड्डी मटल में कुछ है? हो गया वो भी है ना? आ जाओ. Come to our textbook only. Obligations of persons who has received advantage under void contract. Under what? Void contract. थ्री में बच्चों क्या फर्क है इसमें? फिर सेक्शन 64 में क्या था? वॉइडेबल. और ये क्या बच्चों? वॉइड. वॉइड का क्या क्या कारण हो सकता है? मिस्टेक, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट. पूरा सेक्शन 10 आ सकता है ना? है ना? माइनर हो गया, अनसाउंड माइंड हो गया, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है, और क्या क्या? फ्री कंसेंट में तो मिस्टेक था, और वेजरिंग है. गुड. सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबल फ्रॉम द स्टार्ट, या फिर बाद में सब्सिक्वेंट भी हुआ. बराबर है. उसका सबका इफेक्ट क्या बच्चों? वाइज. रेडी? तो अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दैट बिकम्स वॉइड व्हेन एन अग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड, और व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, एनी पर्सन, फिर से वही चीज है, हु हैज रिसीव्ड एनी एडवांटेज. तुम्हारा क्लियर कट बच्चे एग्जांपल वही पेंटर वाला. स्टार्टिंग में इट वाज वैलिड, पेंटर मर गया या फिर पैरालिसिस हो गया, नाउ इट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म. अगर उसने एडवांस मिला था, उसको भी रिस्टोर करना पड़ेगा. Such agreement or contract is bound to restore it or to make compensation for it to the person from whom it was received. बराबर. उधर एग्जाम्पल के लिए बच्चों पेंटर वाला भी लिख दो एग्जाम्पल. पेंटर टू का एडवांस. बराबर है. took an advance and died. ये तुम्हारी मर्जी, उसको मारो या फिर पैरालिसिस दो, तुम्हारे ऊपर है. ठीक. क्या हो गया? बड़े आगे. Analysis of section 65. For the language of the section, it is clear that in such a case, either the advantage received must be restored back, or a compensation sufficient to put the position back to the contract should be paid. Point is what? Whenever you use the word restore, restore का मतलब क्या है? ओरिजिनल जैसा था वैसे उसको रिटेन करना, जो ओरिजिनल पोजीशन था उसको फिर से लाना. ठीक है? इतना बड़ा एग्जांपल है. पढ़ो. पढ़ेगा तुम्हारे साथ. चलो. तो मतलब क्या क्या संबंध? व्हाट? ए पेज बी. क्लास के टेस्ट को तुम ऐसा करो, बाद में कैसे करोगे रे? है ना? वो भी एक यूनिट वाइज टेस्ट चल रहा है. ऐसे में नहीं कि तुमको 2-2 घंटे का टेस्ट दे रहे हो, 50 मार्क का, 100 मार्क का. इन चुट के 4 क्वेश्चन आते तुमको, उसमें तुम लोग रोते रहते हो. है? आगे डर के आगे क्या है? वाह वाह. रजत भाई फायर है आज. आज तो लाता तू ना. चलो ध्यान दो. टॉपर आता, टॉपर देख तू. ए पेज बी. ए पेज बी रुपीज 1 लाख. ए दिव्यम ध्यान दे. ए पेज बी रुपीज 1 लाख in consideration of B is promising to marry C, who is what? मेरी बेटी से शादी कर ले, तुमको what? 1 लाख दूंगा. अरे हाँ,
नहीं बोलेगा तो मैं तो पॉकेट में करने वाला था, ऊपर से और 1 लाख रुपए मिल रहा, सही है, वाह। उप्स, सैड स्टोरी, स्टोरी में चेंज। सी इज डेड द टाइम ऑफ प्रॉमिस। दुख भरी घटना है तो। साइलेंस फॉर सी। पी तो सी तो ऐसे मर गया, मर गई। द अग्रीमेंट इज वॉइड बट बी मस्ट कैनॉट एंजॉय द मनी। अरे हाँ या ना, yes to repay back that money. Why? Which contract it is? Void. It is what? Void. Impossible to perform. अरे हाँ या ना, अब से ट्रैफिक जाम ही है क्या इधर? हुआ? इन अ केस, ये एग्जांपल से स्टार मार्क कर दो, ये अलग एग्जांपल, अलग एग्जांपल है, ठीक है? इन अ केस द प्लेंटिफ हायर्ड और गो डाउन फ्रॉम द डिफेंडेंट फॉर 12 months, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एंड पेड द होल ऑफ द रेंट इन एडवांस, पूरे 12 महीने का, इंपॉर्टेंट है। आफ्टर अबाउट 7 months द गो डाउन वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। अगले 5 महीने वो यूज कर सकता क्या उसको? नहीं। अभी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। क्या वो ओनर जो था गोडाउन का, उसको रेंट मिला था 12 महीने का? इज दैट अ बेनिफिट और नो? उसके अगेंस्ट वो और 5 महीने उसको इस्तेमाल करने के लिए दे रहा है क्या? पर गोडाउन ही नहीं बचा, तो रेंट रिवर्स करना पड़ेगा कि नहीं? रेंट रिटर्न करना पड़ेगा कितना? लॉजिकल, गुड। विदाउट एनी फॉल्ट और नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द प्लेंटिफ, जो केस कर रहा है वो, and the plaintiff claimed a refund of what, बच्चों? Proportionate amount of the rent held. Important. The plaintiff was entitled to recover the rent for the unexpired term of the contract. Clear? ये भी important example है. The act requires that a party must give back whatever he has received under the contract. The benefit to be restored under this section must be the benefit received under the contract and not any other amount. Benefit कैसे मिला बच्चों? Only because of the contract. वही हमको रिटर्न करना और कुछ नहीं. A agrees to sell land to B for rupees 4 lakhs. B pays to A rupees 40,000 as deposit at the time of contract. अब ध्यान देना, very important. The amount to be forfeited by A if B does not complete the transaction within a specified period. पहली बात तो फिर से ध्यान दो, सेलर कौन है? A is the seller. अरे हाँ, B is the, ठीक है, कितने का अग्रीमेंट हुआ? B ने A को क्या दिया? You can call it deposit or फिर एडवांस। अरे हाँ या ना? Okay, good. And the amount to be forfeited, what do you mean by this? Forfeit, वो हुआ कि नहीं अकाउंट्स में? Forfeiture of shares, जब्त कर लेना। Forfeit मतलब खत्म, टाटा, गुड बाय, अब तुम्हारा नहीं रहा, मेरा रहा। and बच्चों what? Forfeit. Okay. The amount to be forfeited. Okay. जब तो क्या बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में और क्या? कब्जा, ले लिया, है ना? हड़प, हड़प ले लिया, हड़प कर दिया, हड़प, हड़प बराबर है क्या? हड़प सर बराबर, हड़प कर लिया। The amount to be forfeited. टेस्ट है ना, नर्वसनेस है ना? इन अ वे, हाँ ठीक है, ठीक है, ध्यान दो। 4 लाख का ट्रांजेक्शन, 40,000 का एडवांस डिपॉजिट दिया है और उसमें कंडीशन है कि तुमने जो मुझको 40,000 दिए हैं मैं खा जाऊंगा, जब्त कर लूंगा, हड़प कर लूंगा, तुमको नहीं दूंगा, प्रॉपर्टी भी नहीं दूंगा। दैट इज मीनिंग ऑफ फॉरफीचर ना। इफ यू डू नॉट कंप्लीट द एंटायर ट्रांजेक्शन विद इन अ गिवन पीरियड, मतलब बाकी का भी एडवांस चाहिए, तूने बस मेरे को अटका के रखा, 40,000 एडवांस देके मैं मांग रहा हूँ, बाकी का पैसा मांग रहा हूँ, अग्रीमेंट करते, डीड करते, तू भाग गया 1 साल 2 साल 3 साल और हम लोग ऐसे बीच में अटक गए, तो वो नहीं चाहिए। इसलिए तुमने एडवांस दिया तो अगले जो भी उसके टर्म्स और कंडीशंस के हिसाब से बाकी का एडवांस मुझको XYZ अमाउंट तक चाहिए, वो डेट तक चाहिए। नहीं आया तो क्या, जो तूने उसको दिया एडवांस मैं खा गया, वो तुमको मिलेगा नहीं रिटर्न। अंडरस्टूड? दैट इज व्हाई दिस पॉइंट इज पुट इन द कॉन्ट्रैक्ट। इन व्हाट नेचर?
एज अ सिक्योरिटी, एज व्हाट बच्चों, सिक्योरिटी। और सिक्योरिटी की वजह से तुमने अगर वो पैसा रखा है तुम्हारे पास, then it is no more refundable अगर सामने वाले पार्टी ने बच्चों कॉन्ट्रैक्ट ऑनर नहीं किया। झेपा कि नहीं झेपा? क्या तुम्हारे पास अधिकार है वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो पैसा रखने का? हाँ, तो उसमें स्टार्टिंग से ही वो कॉन्ट्रैक्ट में पॉइंट डाल के रखा है। उसने आगे बच्चों पेमेंट नहीं किया अपने को टाइम में, कॉन्ट्रैक्ट इज void, वी हैव टू रिफंड। नाउ वी डोंट हैव टू रिफंड, नाउ वी डोंट हैव टू रिस्टोर द बेनिफिट। क्या क्या पहले के केसेस में क्या था, void हुए तो रिफंड करना पड़ रहा था ना, और अभी यहाँ पे तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट void हुआ बिकॉज सामने वाले ने खुद माती खाया, तो अपने को रिफंड करना है क्या? ध्यान दो। The amount to be forfeited by A if B does not complete the sale within a specified period. B fails to complete the sale within a specified period, nor is he willing or willing and ready to complete the sale within even a reasonable time. A is entitled to what, बच्चों? Resign the contract. A is entitled to rescind the contract and to retain the deposit. The deposit of the deposit is not a benefit received under the contract. कुछ फायदा नहीं ऐसा चाहिए कि हमको रिटर्न करना है, इट इज जस्ट सिक्योरिटी डिपॉजिट था वो, the buyer would fulfill his contract and is ancillary. What do you mean ancillary? Related. It is with what? Incidental. Okay, so the contract for the sale of land, because ये नेचर का तुम्हारा बच्चों भाई सिक्योरिटी डिपॉजिट वाला नेचर है। ओके, क्लियर? तो रिफंड करने की जरूरत, आ जाओ नोटबुक में। Obligations of person who has received advantage under void agreement or contract that becomes void. बहुत ही टेक्निकल नाम है ना। वाह, ICS ट्रेडिंग मटेरियल में कुछ अलग है क्या? देखो फटाफट। सेम है, एवरीथिंग इज कवर्ड। दो पॉइंट खत्म करते हैं अपन पहले। चल रेडी? चलो, कम्युनिकेशन ऑफ रिस्किशन। रेडी? क्या है रिस्किशन? क्या है? कैंसिलेशन। You have noticed that a contract voidable at the option of one of the parties can be rescinded, but the rescission must be communicated to the other party in the same manner as the proposal is communicated under section 4. Similarly, rescission may be also revoked in the same manner as the proposal is what also revoked. मतलब क्या? Communication होना चाहिए। अब मुझको बताओ when is it that क्या था वो section 4 के हिसाब से? When is the communication of offer complete? When the other party comes to have knowledge about the same। बराबर है क्या? Same thing। अगर तुम कैंसिल भी कर रहे हो वो कब से इफेक्टिव माना जाएगा? When the other party comes to know about it। हाँ या ना? Clear? And effects of neglect of promisee to offered promiser
reasonable facilities for performance. If any promisee neglects, okay, or refuses to afford promisor reasonable facilities for the performance of his promise, the promisor is excused by such neglect or refusal as to any non-performance caused thereby. एग्जाम्पल 39 देखो, 30 टाइम पास है 39. तुम डॉक्टर के पास बच्चों गए और तुमने डॉक्टर को बताया ही नहीं क्या दुख रहा है, किधर दुख रहा है, तो तुमको ट्रीट कर पाएगा क्या? डॉक्टर बोल के हंसने चालू हो जाते थे, है ना? क्या जॉनी भाई की याद आ रही तेरे को? ओके, डॉक्टर विल अंडरस्टैंड हाउ टू ट्रीट यू. अगर तुमने कुछ बोला ही नहीं तो नहीं ना. सेम थिंग. ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी, ध्यान दो बच्चे एग्जाम्पल 39 में. ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू रिपेयर बीज हाउस. तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्टर बच्चों कौन है, काम करने वाला इंसान कौन है? ए. अरे हाँ. बी neglects or refuses to point out to A the places in which the house requires repair. क्या कर पाएगा बच्चों, काम कर पाएगा कि वो? A नहीं. A is excused from the non-performance of the contract if it is caused by such neglect or refusal. मैं तुमको कितना भी पढ़ाऊं तो तुम तो पढ़ने को तैयार ही नहीं हो. अरे हाँ या ना? Am I liable for not teaching? No. Clear? हाँ जाओ, नोटबुक में आ जाओ. फटाफट. Section 66. And revocation also, no? And revocation under section 5, no? '67. Effects of neglect of promisee. Effects of neglect of promisee. To afford promisor. Promisee. To afford promisor. To afford promisor reasonable facilities. Reasonable facilities for performance. Reasonable facilities for performance. Full stop. उसमें क्या लिखोगे? Promisor not responsible for non-performance. Promisor not liable for non-performance. हुआ? डन? यूनिट खत्म हो गया? मजाक 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 में रजक मर गया. बचा थोड़ा सा, तो अगले यूनिट में जाना चाहिए था डिस्चार्ज में. ठीक है, नो प्रॉब्लम, सह लेंगे, थोड़ा देख लेंगे, नो प्रॉब्लम. ठीक है, अभी के लिए इतना ही.